Shall we start, sir? Am I audible? Yes, you are audible. Once confirmed with sir. Good morning. Good morning. Sorry. So, shall we start? Hi, yeah. Start, please. I'm not A very audible. good morning. Yeah, sir, you are perfectly audible. Thank you. But Very good morning to a teacher and my dear fellow mates. My name is Vanshika, and I would like to welcome you all in today's Indian Society and Social Justice class on the behalf of dear Delhi team by most esteemed faculty, Manoj sir. His experience and expertise reflects in the way he teach. So, as it is an Indian society class, I would like to recite a shloka which reflects the major character of our Indian society, and that was taught by our sir. Shloka is Sarve bhavantu sukhina, Sarve santu niramya, Sarve bhadrani pashyantu, Ma kashita sukh bhag bhavita, which literally means we pray that all be happy, all be healthy, all be good, and no one should perish. At last, I'd like to share a quote by one of the most influential scholars, Karl Marx, and the quote says, "Production of too many useful things reflects results into many useful people." And I feel this is very relevant today because with the advancement of technology, most of our life becomes comfortable, and when we are comfortable in our lives, we minimize the scope to grow. So so move out of your comfort zone, struggle, and grow. Thank you. Over to you, sir. thank you. Thank you, everyone. And good morning to everyone. Today, we'll start first. और इसको बंद करो आवाज अपनी और फोन साइलेंट पे रखना. First of all, we are going to discuss religious diversity. And when you talk about India's religious diversity, you can simply say India is a country of almost all the religions which are existing on this earth. And it happened due to India's very nature, which is Atithi Devo Bhava, tolerance, compassion, and the Vasudhaiva Kutumbakam. So, in India, and you don't need to go a very long way to write the religious diversity. So please write with me when I'm writing on the board. Religious diversity means in India, there are number of religion and their followers. In fact, almost all the religions, of this earth are in India. When we talk about religions, then we have to go with the Sanatana, for example, Sanatan Dharma, and just after the Sanatan Dharma, those sects which are which have the roots in
Sanatan Dharma in India, you can add them, though they would have been or they could have been against the practices of Hinduism, but the existence is based on that only. For example, I have said that the Sikhism is nothing but the all the treatise of Sikhism is basically based on the Vedas and Upanishads, not based on, in fact, almost you can say the translation of the Upanishads. So you can say the root is there only. And when you see Buddhism, when you see Jainism, preachings of the Buddhism, Jainism, or anything else, anything else nahi, balki any religion which emerged in India has the roots in Hinduism. For example, Buddhism, which mainly emphasizes on meditation, and there are several ahimsa, stay, etc., etc. So most of the things related with the meditation or even self-purification, you can find out only in Patanjali Yoga Sutra. When Maharshi Patanjali explains the tapa, then almost all the preachings of Buddhism and Jainism, especially the conduct rules of Buddhism and Jainism, can be found in the explanation of Maharshi Patanjali's Yoga Sutra. And it is not unheard to you that Maharshi Patanjali was very prior to Mahatma Buddha or Mahavir Jain. So, after Sanatana, other religions, Buddhism, Jainism, Sikhism, है ना? These are the religions. कुछ छोटे छोटे और sects भी हैं. There are several sects also, but we do not care about them. तो ये सब कहाँ से आते हैं? और जानते हो? If you say Hinduism a religion, then you can say Hinduism is also the product of the Sanatan Dharma. But Hinduism is not any religion. Even the Supreme Court of India has also made it clear. Okay? So, sometimes we find that any particular sect or a religion is very much practiced and followed in particular regions. And when we see the history, we find that, as I have told you, that in India, religion, dharma was not rejecting the science. In fact, it is only India's Sanatana Dharma whose scriptures are full of scientific developments, scientific ideas. Patanjali Yoga Sutra provides you the self-development. Charak Sanghita, Vagbhat,
etc., etc., etc. You find in social Sanghita that there was neurosurgeons also in the ancient India. So religious diversity is here. But one more reality is that it was India only and it is India only in this world. Only India, only Bharata, where no Galileo was, Kumar A to me. Genesis of the term Sanatan Dharma can be related with the genesis of the human race. Actually, Sanatan matlab hota hai the one which is and which will all pervasive. When you became you matlab तुम्हारा जो होमो सेपियंस है became so wise to understand that there is someone, not the human being, nor any other worldly creature, but someone else who guides us, who regulates us, who created us, who created this whole universe. Since then, you can say Sanatana started. Okay? And Sanatana Dharma, Sanatan is a Sanskrit word and Dharma is also a Sanskrit word. Always remember, Dharma in India was never religion. For the term dharma, artha, kama, moksha, artha, kama and moksha, earning money, earth, worldly behavior and conduct, kama. That is not only a physical relation with two opposite sex. Kam means all the worldly things. Moksha, salvation. So for kama also, kama, not kama. In Sanskrit it is kam. There is no word in any language. Similarly, what dharma represents or what it has in it, it cannot be represented in any other language. Why? In Europe, Western countries, dharma was separate, rule was separate, dharma was holding the life of each and every individual as well as the state. In India, dharma was the guiding factor. Guide karta tha. When in Artha Shastra written by Kautilya, it is written that it is the dharma of kinga. Dharma hai king ka.
for that he should take care of his subjects. That is Yogakshema. तो आप कहोगे उसका ड्यूटी है, उसका दिस है, उसका दैट है. But in India, dharma includes everything. In fact, in India, dharma is related with the duty, responsibility, accountability, compassion, kindness, humbleness. गिनते जाइए आप. Very nature of dharma in India is that, okay, people do not understand what is dharma. That is why it is to be defined as dharayeti iti dharma. Okay, the thing that can be, all the things which you can have in your inner self is dharma. Everything. And you know, the main pillar of the dharma in India is love. प्रेम. वो आप वाला नहीं जो हथेली पे लेके घूमते रहते हो सड़क पे, ऐसे हाथ में दिल लिए घूम रहे हो, वो नहीं. उसके बदले में तो आपको मिलता है 3 बात. 2 तो कम से कम मिल ही जाता, कुत्ता कमीना. वो वाला नहीं. द लव, प्रेम. ठीक है. सो आप इसको किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस मत करो. कोई कंपैशन वैपैशन नहीं. लव, प्रेम, लव. एंड लव इज एवरीवेयर. ना 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 ना. कौन ह्यूमैनिटी कह लिए मुस्कान? तब तो यही कहोगे आई लव यू. कहेगा तो आई लव यू. लव फॉर द ट्रीज. Actually, you love each and everything. If you do not love, you cannot have. Even you love your pen. If you don't, the pen will not write good. You love food. That's why you can eat. अरे और भी कुछ कुछ प्रेम करो कोमल. केवल बुक से प्रेम करने से कुछ नहीं होगा. लव टू स्टडी आल्सो. नहीं तो लाइब्रेरी में बहुत किताबें हैं, लाइब्रेरियन बड़ा प्रेम करता है, पढ़ता कुछ नहीं है. अच्छा, वो कहीं चली भी जाती है आपकी वो पेन की कैप. अच्छा, कोई बात नहीं. चलिए ठीक है. संभल के रहना, नहीं तुम्हारे सर का वो ऊपरी हिस्सा भी कहीं ना चला जाए. खोपड़ी का ऊपर वाला वो भी तो कैप है. चलिए. हाँ, स्प्रेड लाइफ गेट लव. अच्छा गीतांजलि, बहुत बढ़िया. एथिक्स पेपर नहीं, धर्म पढ़ा रहा हूं. तो इन इंडिया द रूट ऑफ धर्म was and is love. You might be knowing about the stethoscope. पढ़ा है किसी ने? जगदीश चंद्र बासु, the scientist of India. So stethoscope tells that there is a movement
इवन इन द मेटल्स एटम्स, चेयर का भी जो पार्टिकल है वो मूव करता है, उसमें भी जान है. Okay, that is why you have to love everything, every and every aspect of this earth. Okay, तो कहने का मतलब है, in India, though there are several dharma, but actually dharma is based on love. अरे अभी मैंने आपसे क्या कहा यार? देखो, या तो क्लास में ध्यान से सुनो मिस्टर दास, और नहीं तो फिर कुछ बताओ मत, चुपचाप बैठे रहो. आई एम टेलिंग यू, धर्म इन इंडिया, अब चाहे जितना धर्म लाओ, सब में मिलेगा प्रेम. बिकॉज ऑल द धर्मास आर द बाई प्रोडक्ट, और यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ सनातन धर्म. डोंट यू थिंक the dharma, religions, not dharma, religions, which were created by the people, are only the product of the Sanatana. You say that India only has Sanatan. I say this world had Sanatan Dharma. Because no one can claim that I was the messenger of God and God has given this to me with respect to Sanatana. क्लियर? तो बाकी जितने रिलीजन है वो सब मैन मेड हैं. सनातन इज नेचर मेड. नो वन कैन क्लेम. क्लियर? चलिए, अब क्लियर है तुमको? तो जब मैं कह रहा हूं कि द लव इज द रूट ऑफ द रिलीजन, थोड़ा छोटा कर लो इसको, कम कर लो, नैरो कर लो, के दो रिलीजन. तो कोई भी रिलीजन होगा, सब में प्रेम होगा. ऐसा थोड़ी ना क्रिश्चियनिटी में नहीं होगा, इस्लाम में नहीं होगा, वहां भी है, करते नहीं लोग, अलग बात. लव इज द मेन पिलर ऑफ रिलीजन्स. ओके, चलिए, तो बस हो गया कि यहाँ पे अभी क्या है, क्रिश्चियनिटी है, पारसीज हैं, और कौन है, इजराइल वाले क्या होते हैं, ज्यूज हैं, और इस्लामिक हैं. हाँ, ये तो भूल ही गया, इस्लाम है, और क्या है, जो भी है. सो ऑल द रिलीजन्स आर हैविंग a an inter relation. That is why there is coexistence of all in India. बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे. अच्छा जीव्स, अरे ठीक है, ठीक कर लो यार, स्पेलिंग स्पेलिंग ठीक कर लिया करो, टेंशन ना लिया करो, मुझे भी मत दिया करो, ठीक है? चलो, so when I write here interrelation,
it may would have. अरे बाप रे, किसका है? प्रीति कुशवाहा का है। अच्छा, actually प्रीति not Buddhist, Islamist claim, Christians claim, everyone claim, every religious people claim the same. ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो और दिस इज, अच्छा, तुम्हारा ये तमाम जो स्टोरी लिखा है तुमने, इसी में तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब है। यू हैव रिटन defended without communal conflict. This is only the reason why there is a communal conflict, not communal conflict, communal riots. Because everyone who is religious will be, अब मैं जरा सर्टेनिटी और मैं एकदम कंप्लीट उसके साथ बोल रहा हूं, will be extremist. That is why India is not the land of religions or the religious activity. India is the land of spirituality. ठीक? जो धार्मिक होगा वो आतंकवादी तक हो सकता है। The one who is religious can become a terrorist, but the one who is spiritual can never speak against anyone. ओके, सो अभी हमको आगे बढ़ने दीजिए, मैं अब जो बता रहा हूं सुनते रहिए। इंटररिलेशन, and it is almost completely contrary to you. I have written here interrelation and you are saying communal conflict. Interrelation in the sense that in terms of their emergence before Gautam Buddha, who was Siddhartha, a person born in a Kshatriya Kul and was the son of a Sanatan Dharma followers king. People used to write here Hindu, but no any history tells that in ancient India there was any word which was Hindu. The documented things also, nowhere the term Hindu is written in this Artha Shastra of Kautilya. वो भी सनातना लिखता है. And those who say that my religion is this, my religion is that, tell them there is a written script of Arthashastra, written documented fact of 325 BC, in which Vedas are mentioned, Vedic mathematics is mentioned, chemical reactions, technology or technique was also taken from the scriptures.
Shalya Chikitsa mentioned. Chanakya was expert in all those things you might be knowing. Tell them, जब एक तरफ गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध थे, आई सॉरी, भगवान बुद्ध थे, मैं भी कहता हूं भगवान ही है। तो जब भगवान बुद्ध नापित वंशजों को सपोर्ट कर रहे थे, बुद्धिज्म वॉज सपोर्टिंग द किंग ऑफ मगधा, घाननंद, जो जाति से नाई थे, नाइयों का शासन था वो। ओके, तो उसी समय आपको पता है भगवान बुद्ध थे, और उसी समय चाणक्य का, कौटिल्य का बचपना था। जब कौटिल्य की एजुकेशन चल रही थी, तब तक बुद्ध ने अपना परिनिर्वाण ले लिया। इज दैट क्लियर? तो लगभग सब एक समान है। एंड जस्ट रिसेंटली आई हैव टोल्ड यू, जितने लोग भी मेडिटेशन वाले धर्म हैं, चाहे जैन हो चाहे बुद्धिज्म हो, सब वेद और महर्षि पतंजलि का योग सूत्र से लिया गया है। बुद्ध कैसे गए तप करने, कहां से सीखा कि तप से ईश्वर मिलता है? हाउ इट इज पॉसिबल? और अगर वो भगवान उनको सीधे बताते कि आप आओ ऐसे करो, तो व्हेनेवर, बुद्धिज्म कैसा धर्म है सोचिए जरा, बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, पर गॉड के नाम पर क्या करते थे वो? चुप, जवाब नहीं देते थे। मालूम है क्यों? भगवान बुद्ध को पता था इस जगत, ये जगत मूर्खों से भरा पड़ा है, ईश्वर के बारे में बताया नहीं जा सकता, रियलाइज किया जा सकता है। गॉड रियलाइजेशन की चीज है, जानने की चीज नहीं है। एनीवेज, सो रिलीजन जिसको आप कहते हो वो भारत का धर्म नहीं है। भारत जो धर्म शब्द यूज करता है, दैट इज वेरी ब्रॉडर, दैट कैनॉट बी कन्फाइंड in any term like religion, sect, this, that, never possible ही नहीं है, not possible. Okay, now, so interrelation is in terms of their emergence, और कुछ धर्म का क्या है interrelation, और in terms of existence. Emergence, as I have told everyone, others like Jain Dharam, Buddhism, Sikhism, सब इंडिया में पैदा हुआ. It means that these all have some interrelation with the Sanatan Dharma. Yes, definitely it is umbrella. अरे भाई, इसका ना शुरू है ना कभी खत्म होगा. That is सनातन. तो कैसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो तुम? Why you are trying to define? As you cannot define God, you cannot define Sanatan Dharma. If you want to define, you can say from the beginning of the human race, what was the religion and what is the religion, that is Sanatana.
चलिए, एक्चुअली हमारे किसी भी नो एनी ऋषि, महर्षि, मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड, no one defined, no one tried to define. In Bhagavad Gita, everywhere you find Sanatana. No definition of Sanatana. धर्म को डिफाइन करने की जरूरत क्या है? Why it is needed to define any dharma? Dharma can't be defined. Religions can be defined. Define the religions. Dharma cannot. In terms of their emergence and in terms of their existence. Like Islam and Christianity emerged from the same tree. Both are the cousins. चचेरे भाई हैं. उनके यहाँ आदम और हवा है, तो सेम आदम एंड ईव हैं. है ना? So there is interrelation, and the interrelation in terms of emergence and their existence. But as India has all these religions, due to misunderstanding and attitude to establish hegemony or dominance of one's own religion, what happens? We see the communal conflict and sometimes the riots also. लिख दीजिए. Done? Say yes or no. Done or not? Okay. Now, the Constitution of India as relies on Vasudhaiva Kutumbakam, the whole body is our family. If you can find out any term for Kutumb in any other language except the Sanskrita, I'll reward you. कुटुंब भी एक ऐसा टर्म है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं पाया जा सकता. No in any other language. Kutumb is not family, which is defined by the sociology. Okay? When you say Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is the family or our family. अरे कह दिया नहीं हो सकता तो क्यों कोशिश कर रहे हो निजामा पट्टनम? आज आप लोग पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा दिलाने में आमादा हो गए हो. मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक मी एंग्री. है
मैं होऊंगा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं गुस्सा होने वाला नहीं हूं. सो कुटुंबकम जो है, दिस यू कैनॉट फाइंड द टर्म. व्हाई? When you say Vasudhaiva Kutumbakam, the whole word means the Vasudha means the earth. Anyone who is on this earth is part of our family. And you'd say family, तो क्या होता है? तुम्हारा बीबी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, और शादी होने के बाद माँ बाप भी नहीं, यही ना? But the earth is family. Means animals, birds, हैं? और फिर आपका वाटर, जल जो है, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ट्रीज, plants, everything is your family. This is the meaning of कुटुंब. कौन सा वर्ड देगा इसको? अब ढूंढो, वननेस, टूनेस, थ्रीनेस, फोरनेस, ढूंढ के बताओ. सो as the Constitution of India क्या लिखा है आपने? व्हाट यू हैव रिटन, उसके आगे लिखना है वसुधैव कुटुंबकम. All the religions are also welcomed and recognized. Same. जैसे हम दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं, इफ यू से द होल अर्थ और होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, once you say, then after that you cannot say that this particular religion is not welcomed and recognized, because different type of peoples on this earth are praying the God in different manners, and they have given a particular name for that. Someone has given Christianity, someone has given Islam, someone has given this, someone has given that. But what is really religion? What is dharma? Almost every religious messengers came to India, learn here, then go back. If I'll say Jesus Christ was here in India, you may surprised. जीसस क्राइस्ट इंडिया आया, क्रिया योगा सीखा, और एक ग्रेट क्रिया योगी जितने भी होता है, anyone who is a very good in kriya yoga can show number of miracles like भगवान श्री कृष्ण. एक साथ 2, 4, 5, 7 जगहों पर वो एग्जिस्ट कर सकता है, प्रेजेंट हो सकता है with his body. So if anyone is doing any miracle, remember that he is either tantric or kriya yogi, no one else. तो सब यहां आया, सीखा, धर्म सीखा, फिर गया. चलिए, also welcomed and recognized, same. Now कैसे कहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहता है कि all the religions are equal, though a state does not has
रिलीजन। अभी सेकुलरिज्म किसी ने बोला था, वो भी समझ ले सेकुलरिज्म क्या है इंडिया का। इट मीन्स स्टेट not support or protect any particular religion or sect, but क्या कर सकता है, can protect all the religions equally. So किसी को स्पेसिफिकली नहीं कर सकता, लेकिन सारे रिलीजन्स उसके लिए एक जैसे हैं. दैट इज वाई इंडियन सेकुलरिज्म is a different one. इंडियन सेकुलरिज्म इज यूनिक कह सकते हैं. इंडियन सेकुलरिज्म, it is not the idea, it is not the idea like Western secularism. Western secularism. ओके, यही कारण है कि हम कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ सेकुलर स्टेट बट इज अ पंथनिरपेक्ष स्टेट, indifferent to promote any sect or pantha. Indifferent towards the religions, but does not reject the religion. Does not reject the religion. ठीक है. This coexistence of several religions, coexistence of several religions poses challenges also. Challenges like communalism, religious extremism, and communal riots. These communal riots were during the British period and after that also. अंजलि राणा, सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म नहीं कहा जाता. कहा जाता है कि दिस इज नॉट नेगेटिव idea of secularism but a positive idea of secularism, not positive secularism. Secularism positive negative नहीं होता. This is all about your religious diversity. Now linguistic diversity. Linguistic. It also poses challenges, hatred, on the basis of regional language, and sometimes clash on the basis of the same. Okay,
चलिए, एंड समटाइम्स एक और लिख दीजिए, अपोजिंग द हिंदी which is considered as the language of the nation also. राष्ट्रभाषा कहते हैं ना, राष्ट्रभाषा हिंदी, लैंग्वेज ऑफ द नेशन आल्सो. चलिए, आप जान लीजिए, दीज आर द सिंबल्स व्हेन यू रिजेक्ट, व्हेन यू अपोज हिंदी, you oppose indirectly the nation also. And it is very sad for me to say, in fact, I would like to say sorry to say like this, that if anyone does so, he shows his attitude against the nation also. India is a polyglot country. बहुत सारा लैंग्वेज है. Approximately 2000 languages are in practice, and approximately 1000 languages are spoken by the people of not less than 1 lakh. ऐसे लोग हैं जिसकी संख्या जो है, ठीक, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आप ऐसे लिखेंगे, बिकॉज यू मे गेट टू नो एनीथिंग फ्रॉम एनी बुक, एंड एवरी बुक इज रॉन्ग with respect to the language and dharma. Like, I did not say anything regarding the Dravidian dharma. South Indian people of India were termed as Dravidian and North Indian Aryan. And the scientific experiments have proved that everyone who was Indian, जो भारत के थे, जो भारतीय थे, वो सब आर्य हैं, कोई द्रविड़ नहीं. There is no any categorization like Aryans and Dravidians. Similarly, the languages in India were categorized as of two families of the languages. Two families of the languages: Indo-Aryan, the languages which are नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, इसको उन्होंने कह दिया इंडो आर्यन, और दूसरे को बोल दिया द्रविडियन. बट सॉरी, द्रविडियन मतलब तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, इनको बोला द्रविडियन. बट एज the recent developments, no, as we see the history of India, especially ancient, लिख दीजिए, it becomes clear that there was
no any such demarcation okay of Indian territories or societies. In Vedas, everyone was termed as Arya. Even when you see the scriptures during the Krishna Deva Raya, जो कि medieval period में थे, then also you will get to know the people of the Vijayanagar dynasty were greeting each other by saying Arya. So how those Aryas can become Dravidians, the inferior category? This was also a conspiracy to divide India into north and south. Further, emergence of the languages. Emergence of the languages, जिनको आप द्रविडियन बोलते हो, emergence of the languages in India, या Indian languages, even the जिसको so called कह दिया Dravidian, based on Sanskrit, whether it is Malayalam, Telugu, whatever, सब संस्कृत से निकला है कि नहीं निकला? इधर होगा कोई बताए जरा, साउथ इंडिया का लोग, जो भी है बताना जरा, संस्कृत से मिलता जुलता लैंग्वेज है कि नहीं है तुम्हारा? स्क्रिप्ट चेंज है बस. सो संस्कृत, एंड संस्कृत इज आर्यन लैंग्वेज. आर्यन बोलते थे हम, सारे आर्य लोग बोलते थे. सो हाउ, आगे लिखते जाइएगा, दस हाउ द सदर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मलयालम, तेलुगु. पीयूष चौधरी, तुमको अच्छा वो मुझे आप कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी. व्हाट आई से, डू नॉट गेट दैट. ओके, व्हाट यू रीड इन द बुक्स, राइट दैट ओनली. जो मैं कहूंगा वो मत सुनना, ठीक है? अपना ज्ञान मुझे देते रहना. नो द लैंग्वेजेस which emerged from Sanskrit, and the Sanskrit was Aryan language, then how those languages can be called Dravidian? How? मेरे पप्पा जायसवाल हैं तो मैं भी जायसवाल हूं. राजपूत थोड़ी हो सकता हूं, ब्राह्मण नहीं लिख सकता, पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी नहीं लिख सकता, ना ही मोहम्मद मनोज जायसवाल लिख सकता हूं. ओके, so if the languages have the root in Sanskrit, then how those languages can be termed as Dravidian? So लिख दीजिएगा आगे, this was nothing but a conspiracy to divide India into north and south. Divide India. क्यों? क्योंकि जो फॉरेन रूलर्स था, स्पेशली ब्रिटिशर्स, उनके लिए रूल करना इंडिया में पॉसिबल ही नहीं होता अगर वो इंडियंस को डिवाइड ही नहीं करते. ओके, चलिए, बाकी आपने लिख दिया है कि लैंग्वेज के प्रॉब्लम से क्या क्या होता है. और ये बता देना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करती है, कौन से शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेरेशन दे देना, काम खत्म. एनी क्वेश्चन इफ एनीवन वांट्स टू आस्क विद रिस्पेक्ट टू दिस, कैन आस्क. किसी का कोई सवाल है? नहीं है? क्वेश्चन पूछिए.
सवाल ये बनता मिस्टर पीयूष चौधरी कि सर हाउ यू सेड दैट इंडिया विच इज अ नेशनल लैंग्वेज, तो मुझे खुशी होती। पर अब इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ लीजिएगा। एथनिक एंड racial diversity, it is also called as ethnicity. Ethnicity. यहां डेफिनेशन लिखिए। ethnicity is defined as a collectivity of people यस अविनाश बिल्कुल होगा, तभी तो मैंने बोला है when India can be spoken like भारत। अच्छा, इंडिया इंडिया के मामले में स्पेशली, सॉरी, ये जो भारत और इंडिया का कंट्रोवर्सी है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? देखो, ये निजामा पट्टनम जो है, ये लगता है हिंदी न्यूज चैनल का डिबेट सुनता है। यू वॉच हिंदी न्यूज चैनल डिबेट? क्यों भाई, तुम तो पहले भी मेरा छात्र रह चुका है, हैं? इतने नालायक लोग हैं इस देश में जो टीवी पर आते हैं, उनको आर्टिकल 1 पढ़ना ही नहीं आता। इंडिया दैट इज भारत, इफ आई से धर्मा, that is duty. What it means? जिसे तुम धर्म समझते हो वो ड्यूटी है। अरे मैं मीनिंग पूछ रहा हूं, सेम सेम लिख रहे हो। सराम, शेम शेम हम बोलेंगे। का मतलब क्या हुआ? जिसको तुम धर्म कहते हो वो क्या है? कर्तव्य है। Isn't so? Yes or not? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अरे मूर्खों, ओ इडियट्स, as you cannot speak Bharat well, that is why you think that this is India. तो हे मूर्खों, जान लो जिसे तुम इंडिया समझते हो वो भारत है। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 1। So there is no any need to change the name of Bharata and all. वो मूर्ख जो हैं, जो नहीं बोल पाते थे, इंडी इंडी करते थे, उनके लिए इंडिया हो गया। और एंड इफ यू फील वेरी प्राउड with the name,
which was not given by your father or mother, but someone else who was sometimes your exploitator, जिसने मार मार के तुम्हारे पुरखों की कमर तोड़ दी, गोलियां मार दी, तुमको कुत्तों की तरह रखा. If you feel the proud to have that name, given the name by him, feel proud. Then you can be. But Article 1 does not. The Constitution is not feeling proud for that. Constitution कहता है जिसको तुम इंडिया समझते हो वो भारत है. India, that is Bharat. Not Bharat, that is India. If the people who are claiming to be a very wise and rational people do not have the knowledge of this simple English, तो उनको अपनी गर्दन रेत के मर जाना चाहिए, कहीं किसी जगह मुंह नहीं दिखाना चाहिए. ऐसा डिबेट टीवी पे नहीं सुना होगा. अरे निजामा कहाँ गया? हाँ, इंग्लिश पढ़ो. वेल्डन की क्या बात है? हम तो आर्टिकल 1 डिफाइन कर रहे हैं यार. इसमें वेल्डन है ही नहीं है. ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इंडिया के इंटेलिजेंस को वेल्डन बोलो. हम तो केवल आपको बता रहे हैं कि लिखा क्या है. आई ऑलवेज राइट. तुमको पता नहीं होगा अंजलि त्रिपाठी, आई एम ऑलवेज राइट. आई कैन नेवर बी रॉन्ग. मेरा नाम ही मनोज जायसवाल है. और मैं एक ही बात कहता हूं जो लोग जानते होंगे कि ह्यूमैनिटीज आर नथिंग बट द गेम ऑफ वर्ड्स. शब्दों का खेल है. शब्द ही नहीं समझते हो तो सब्जेक्ट क्या समझोगे? चलो, तो भारत इंडिया कभी था ही नहीं. इसको पुर्तगीज ने और अंग्रेजों ने बनाया. भगवत गीता में लिखते हैं धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा. हे भारत श्रेष्ठ. अर्जुन को क्या करें कृष्ण? भारत श्रेष्ठ. भरतर्षभ, भरतर्षभ, भारत श्रेष्ठ. हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, भारत के श्रेष्ठ पुरुष महाराज अर्जुन. महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो कहा गया है, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्यहस्ति न तत्क्वचित्. जो महाभारत में कह दिया गया है, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए. देयर इज नथिंग remaining to speak or to say about dharma, artha, kama, moksha. यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्. और जो यहां नहीं कहा गया है वो और कहीं नहीं कहा गया है. तो भगवत गीता में महाभारत में भरतर्षभ, भारत श्रेष्ठ आ रहा है और आपको गौरव होता है. यू फील प्राउड to name it इंडिया. हमको तो शर्म आती थी, आज भी आती है इंडिया बोलने पर क्या करूं, अंग्रेजी में लिखवाना पड़ता है. मैं तो बस इतना वेट कर रहा हूं कि इंग्लिश में भारत लिखा जाने लगे. दैट्स इट. एंड यू नो, पॉलिटी के कंटेक्स्ट में जान लो, टू यूज भारत देयर इज नो नीड टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. समझे? वो भारत ही है. इंडिया, दैट इज भारत. क्या जरूरत है चेंज करने का?
इतना डिबेट हो गया, इतना फुटेज खा गए, इतना टाइम आपका आपने अपना बर्बाद कर दिया डिबेट सुनने में टीवी पर। जान लो, टीवी का डिबेट सुनना बंद कर दो, नहीं तो जो नॉलेज है वो भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्या करवा रहा था मैं। हाँ, एथनिसिटी का डेफिनेशन लिखवा रहा था। प्लीज राइट, एथनिसिटी is defined as a collectivity of people of a distinct nature in terms of race, nasl, race, descent, and culture. Ethnicity, ठीक है? Thus, an ethnic group, thus an ethnic group is a social collectivity, having some certain historical and common attributes, such as race, religion, ट्राइबल कम्युनिटी। वो होते ना कबीले के सरदार, है ना, तो एक कबीला दूसरे का नहीं होता था। ट्राइबल कम्युनिटी लिख दीजिए, उसकी कम्युनिटी की जगह पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी लिखिए, पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी। लैंग्वेज, अटायर, वेशभूषा, अटायर, डाइट, कई बार खान पान भी, डाइट, एटसेट्रा। अब देखो, जब कोई एथनिक ग्रुप हुआ तो पहली बात तो ये समझ लो कि एनी एथनिसिटी इज नॉट स्टैटिक वन। पैर मत हिलाओ जी, सीधे बैठो एकदम। इज नॉट स्टैटिक वन। Why? Even if you perceive or imagine very ancient period, then also you will say that, sir, there was some dynamism, some interaction. क्यों? Suppose any particular ethnic group was producing X product, then other was being produced, Y was produced by Y, and life needs both X and Y. तो क्या करेगा? X will interact Y and Y will interact to X. So ethnicity is never and was never a static concept. ये कभी static नहीं रहा. And this is also the reason why
several historically those ethnic groups which were not in the mainstream of society are presently in the mainstream of society. So if the ethnicity would have been a static one, then how this mobility was possible? Everyone is clear? समझ आया ना? तो एथनिसिटी अगर स्टैटिक होता तो मोबिलिटी कैसे होता? कैसे मीणा, सुना है ना? मीणा, राजस्थान ट्राइबल, जो कभी मेन स्ट्रीम में नहीं था और आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जितना भी रिजर्व सीट होता है उसका 90% नौकरी वही ले जाते हैं. ओनली वन ट्राइब ऑफ इंडिया, मीणा. सुना है ना नाम? हैव यू एवर हर्ड? हाँ, तो ये है, समझ लो आप. तो एथनिसिटी कभी भी स्टैटिक नहीं रही है. लिखिए फर्दर, एथनिसिटी इज नॉट a static category, not a static category. It is a manifestation of the common social, economic, political, and cultural interests. And their protection by certain members in plural society. Therefore, ethnicity is used as an instrument of mobilization for realizing social, political, and economic goals. ठीक. अब देखिए, एथनिसिटी एक्चुअली कल्चरल है. गेटिंग माई पॉइंट? लाइक एथनिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो बुद्धिज्म कुछ और तरीके से लाइफ जीता है. बुद्धिस्ट, जैन, some different way. Sanatanis, different way. Muslims, different way. And now, if you say वसुधैव कुटुंबकम, ये जान लो, जो फार्मूला मैंने वसुधैव कुटुंबकम का दिया है, ये कभी भी सोसाइटी में, सोशल इश्यूज में इसको कभी छोड़ना नहीं है. If you say Vasudhaiva Kutumbakam, it means all the religions are also same. No superiority, no inferiority. And if anyone
follow that superiority or inferiority kind of a mindset that results in communal conflict, extremism, and riots. Similarly, आप आगे बढ़ेंगे कि जब धर्म भी सब एक समान होंगे तो हाउ एथनिसिटी कैन बी सुपीरियर और इंफीरियर. एंड यू नो, अभी यहां एक और बात बोलता हूं, सुन लीजिए भाषण. तो आपको कुछ लोगों को पता है कि इफ आई लेक्चर that is the most important thing to understand. जो लिखवाता हूं वो तो आप लिख लोगे, याद ही रख लोगे. सपोज कि कोई कहता है शेड्यूल कास्ट. सो टेल मी, does that mean constitutionally, legally, and even humanly? जब कोई कहता है शेड्यूल कास्ट, तो क्या इसका मतलब वो होते हैं जो नीची जाति के लोग हैं, इंफीरियर कास्ट वाले लोग हैं? तो आप ऐसा मानते क्यों सोसाइटी में? बहुत बढ़िया. क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत गलत वर्ड लिखे हो. इसको कहते हैं सोशल कंडीशनिंग. इट इज नॉट क्लासिकल कंडीशनिंग. जिस किताब में तुमने पढ़ा है आकाश, उसको फाड़ के फेंक देना, ने उसको आग लगा देना. पता है क्यों? Vedic period was not having any class categorization of varna. I have told you was interdependent. No untouchability concept was there. Then how you can write classical? Social कहिए. It is social. हाँ, it is social, not classical. तो सोशल कंडीशनिंग ऐसा हुआ है, एथनिक ग्रुप कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता. सिमिलरली, जैसे कि रिलीजन सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होता, वैसे कोई भी एथनिसिटी सुपीरियर इंफीरियर नहीं होती है. ठीक है, लिख दीजिए. तुम पैर बहुत हिला रहे हो, बाहर जाकर बैठ जाओ. Reservation should be there. It is must in Indian society. And it is must for all the societies, not only Indian. Reservation is in US also. Reservation is in America, this European countries also. The reservation is something else. That is called protective discrimination. समझ लो, अब पूछ लिया है तो बता दे रहा हूं. That is called protective discrimination. होता क्या है, not only Indian society, बहुत सारा सोसाइटी, यूरोपियन, अमेरिकन, सब में. इंडिया में आपने ये जातीय का काम कर दिया, तो अमेरिका और यूरोप में रेशियल था. ब्लैक वर नॉट वेलकम्ड, और अभी भी है. तो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का नेचर है. क्यों है नेचर? दोज हु गेट पावर, they usually try to manipulate the power
And the reason is to hold his or her hegemony and dominance. Okay. For example, when the religions emerged, I have told you, Buddhism was supporting the backward classes. जो रूलर नहीं थे, रूल्ड थे नापितों के लिए. तो ये जब पावर जो है जुड़ जाता है किसी चीज से, Subham, it is possible only then when this reservation shall be rationalized. And the rationalization of reservation policy requires first and foremost correction, application of creamy layer in the reservation of SCs and STs also. Why only Mira community people are holding 90%, are grabbing 90% of the seats approximately of STs? अभी क्या हो गया? वो IS हो गया मीरा. Then also his son or daughter shall get reservation. Why reservation? The ground of the reservation are only 3, presently 3, पहला 2 था. Social backwardness, economic educational backwardness. पहला था Article 15(4), presently 3. Article 15(6) भी जोड़ दो, economic backwardness. If anyone becomes an IS, how he or she is backward socially? है क्या socially? Educationally है क्या? Economically है क्या? Then how he or she can claim reservation for his son or daughter? This must be rationalized. पर ये होने नहीं देगा लोग. And ध्यान देना, if any community people are not agreeing this, SC हो, ST हो, ये लोग ही अगर एग्री नहीं करता कि ऐसा रेशनलाइजेशन चाहिए, तो जान लो, those who are really in need can never get opportunity to excel in their life. वो IS वाईएस नहीं बन पाएंगे. और क्या बिल्कुल होना चाहिए, ये सब मैं बहुत पहले बता चुका हूं. रिजर्वेशन प्रमोशन कैसे होगा? दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज जस्ट अ मॉडरेटली डेवलप्ड. In India, constitutionalism is not well established as it is well established in USA. संविधान में जो कहा गया उसका मजाक उड़ाता है जुडिशरी भी. Judiciary also makes mockery. Article 27 tells that state cannot spend any tax proceed for any religion. पढ़ा है आर्टिकल 27. और फिर क्या होता है? दिल्ली गवर्नमेंट मस्जिद के मौलानाओं को सैलरी देता है और दिल्ली हाईकोर्ट उसको ओके कर देता है. हाईकोर्ट का जज पैसा वैसा ले लिया होगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूं. हाउ इट इज पॉसिबल? मजाक बना के रखा है जी तुमने जुडिशरी का. क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26 एंड यू आर सेइंग ओके. जज हो, अनपढ़ हो क्या?
And even after the CIC remarks, nothing is changed in Delhi. किसी ने आरटीआई डाला, आरटीआई का जवाब दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं दिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक पहुंचा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज mentioned in his order कि it is the clear violation of Article 27. The government should take action against it and government should stop. लेकिन आपको पता है इंफॉर्मेशन कमीशन कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू गिव अ एडवाइस. ठीक है, वैसे ही प्रमोशन में रिजर्वेशन होना भी वैसा ही है. ठीक है, तो ये सब रेशनलाइज हो जाए तो पीसफुल हो जाएगा रिजर्वेशन. ठीक है शुभम, रेशनलाइज यही बोला था शुरू में मोहन भागवत ने. तो जैसे ही देखा कि अरे बाप रे, अगर ये इस पर कोई बात की गई तो सरकार तो कभी बनेगी नहीं, तो बोले तरीका एक ही है, जनरल कैटेगरी के भी गरीबों को 10% का रिजर्वेशन दे दो, भाड़ में जाएं. ये सोसाइटी के लोग सुधरने वाले नहीं है. चेंजेस लाने के लिए पावर में भी रहना जरूरी है. पावर से निकल जाएगा तो चेंज कैसे करेगा कोई भी लीडर. तो कर दिया 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी. चलो, अब उनका जो है ओबीसी से भी कम जा रहा है कट ऑफ. देखा उनका कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पीछे साल लास्ट ईयर वाज लेस देन ओबीसी. देखा था कि नहीं? हाँ, तो जब सोसाइटी में एथनिसिटी को सुपीरियर और इंफीरियर की तरीके से लेते रहोगे तो तुम्हारा हाल यही रहेगा. नो एथनिक ग्रुप इज सुपीरियर और इंफीरियर, but the social conditioning is like that. And always remember, if you want to grow, develop and progress, come out from social conditioning. If you can't, you cannot progress. आगे लिखिए. Ethnicity is a cult, sir, but it is inequality for upper caste when reservation is given to others. Who told you? You did not study. Perhaps you do not know Article 14. And you do not know the concept of equality. कौन सा सब कैटेगराइजेशन? सब कैटेगराइजेशन इन्हीं तीनों के बेसिस पर होगा, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक. वेन एवर इट विल हैपन. रोहिणी कमेटी का आने दो वर्डिक्ट, सॉरी रोहिणी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसको आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है. अभी तो उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है. ये सब कैटेगराइजेशन इसलिए जरूरी है, अदरवाइज द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन शैल गो टू द अपर क्लास ऑफ द रिजर्व्ड क्लास. देयर इज एन अपर क्लास इन द रिजर्व क्लास. SC ST IAS IPS, मियां बीबी दोनों IAS IPS है, बेटा को रिजर्वेशन मिल रहा है. Isn't it the mockery? चलिए, और दूसरी बात, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को हमें ठीक से समझो. तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया, दर्शनी, क्या है? जो भी नाम होगा, कोई और था वो लड़की, नाम था उसका कुछ. जहां तक तुम्हारा मसला है, तुमको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है. इक्वालिटी कैन एग्जिस्ट अमंग इक्वल्स ओनली.
Equality cannot exist among unequals. If any effort is made to establish equality among unequals, it will certainly result in the inequality. For example, you are a girl. You are enjoying anti-teasing law. अरे तो आर्टिकल 28 होगा, 27 नहीं होगा तो आर्टिकल 28 होगा। देख लो इसको, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं, वो मेरा कॉन्सेप्ट गलत कर दिया ना। मैं क्लास में हूं, टेंशन ना लो आप। मैं क्या बात कर रहा था कि कोई भी कैसे सुपीरियर या इंफीरियर हो सकता है। तो लिखिए जरा, एथनिसिटी इज अ कल्चरल फिनोमेना एक मिनट, इसका नाम दिखाओ, कौन है ये जिसने लिखा 27 में नहीं है? ऊपर करो जरा। सचिन जगताप, आइंदा बिना ठीक तरीके से चेक किए ऐसी गलती मत करना दोबारा। इडियट कहीं के। चलो हटा उसको। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखो जी। एंड दस नो एथनिसिटी कैन बी सुपीरियर और इंफीरियर but as we witness in Indian society, there have been ethnic conflicts and even in the present society also ethnic controversies and sometimes conflicts emerges. अब लिखिए रीजंस फॉर द कन्फ्लिक्ट। पहला लिखिए, नंबर 1, रियल और सपोज्ड इंटरेस्ट, रियल और सपोज्ड इंटरेस्ट of the ethnic groups. फिर लिखिए सेकंड, the feeling of insider and outsider. इसका कोई एग्जाम्पल याद है? महाराष्ट्र से यूपियंस और बिहारीज को मार के भगाया जा रहा था, तमिलनाडु में हिंदी स्पीकिंग को वेलकम नहीं करते हैं, तो दिस दैट ये जितना भी है मींस रीजनल। ये कौन कौन से बेसिस पे होता है तो लिख दीजिए, एबीसी, रीजनल,
linguistic, religious, तीसरा रीजन लिखिए, exploitation and deprivation of a particular ethnic group by others, of a particular ethnic group by others. तो वो भी क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा. नेक्स्ट लिखिए, लैक ऑफ जस्टिस, लैक ऑफ जस्टिस और डिलेज इन जस्टिस. इसका मतलब क्या हुआ, तीनों तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एथनिसिटी को अगर कहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, देन दैट इज ओनली द ट्राइबल्स. अदरवाइज हम हर जगह क्या करते हैं, सोशल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को ही करते हैं. दो द स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल्स are also based on their social and educational backwardness, but as we see under article 371, है ना, and somewhere else also, as we see that there are some extra provisions for them. So we can say that ethnicity is recognized only in terms of only for the tribals, no one else. तो हमारे यहाँ एथनिसिटी का वैसा कॉन्सेप्ट है नहीं, पर सोसाइटी ऐसी है, इसको हम लोग मानते हैं सोशल इविल. द एथनिक सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी इज अ काइंड ऑफ सोशल इविल. चलिए, ये हो गया. इसके बाद जो है रेशियल डाइवर्सिटी है, लेकिन अब ये भी रॉन्ग हो गई है. रेशियल डाइवर्सिटी इज आल्सो रॉन्ग. जो डीएनए टेस्ट हुआ तो पाया गया कि सारे इंडियंस जो हैं वो सब क्या है, आर्यंस हैं. थोड़े बहुत जो पहाड़ वहाड़ पे कुछ मंगोलाइट्स पाए जाते हैं, उनको छोड़ करके सारे जो है आर्यंस. ठीक है, तो उनकी बात कर लेंगे कभी. अगला हेडिंग आप रेशियल डाइवर्सिटी डाल दीजिए. अब रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, लिखिए. अ रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल with a distinctive set of physical features such as skin color, type of nose,
form of hair, etc. Though the recent scientific developments prove that the different skin color of Indians and some facial structures do not form the basis of difference in race. The DNA test has proved that the people of North and South both are Aryans. But the racial difference is found within the Aryans. इस पर और बातें हम लोग कल करेंगे. एक्चुअली मेरी क्लास का टाइमिंग जो दूसरा वाला है ना, वो आरके पुरम जाना होता है यहाँ से करोल बाग, थोड़ा अर्ली हो गया. अर्लियर इट वाज 11:45, अभी 11:30 हो गया. सो एनी क्वेश्चन इफ यू कैन वांट टू आस्क, यू कैन आस्क इन 5 मिनट्स. ठीक है. और ये जो भी सचिन जगताप है, आर्टिकल 27 ठीक से पढ़ो तुम, दोबारा ऐसी गलती मत करना. 21 साल से मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 21 साल से पढ़ाता हूँ. हाँ, मैं पवाइड का इंडिया का टॉप क्लास का टीचर रहा हूँ. एनी क्वेश्चन एनीवन वांट टू आस्क कैन आस्क, अदरवाइज आई विल टेक योर लीव. सवाल है कोई तो जल्दी पूछे, नहीं चलूं मैं. It is just a foolish, it was created by the judiciary again. एक डिसीजन जो है वहां की हाई कोर्ट का, ये पूरा का पूरा दंगा करवा दिया. थैंक यू.